Hello everyone, welcome to my YouTube channel CognitiveCoders. So today in this PySpark video, we'll learn how to use the temporary field. Okay, I think you have already heard about this function because it's a very much common function in Python. Whoever is trying to learn the Spark activities and Spark things in data engineering, I think they have already gone through this temporary function. So who don't know about this function, don't worry. We'll go through this today. Okay. So coming to our notebook, so I have already created one data frame here. You can see. So in this data frame, if I want to separately, uh, if I want to separately show few columns like ID and name or roll number, then what I will create one different data frame. Okay. So okay. So DF1 equals to select statement. I use the select statement. हम लोग यहाँ पे select statement का यूज करेंगे. DF dot select के बाद क्या करेंगे? तो I will do after that, जो भी कॉलम को लेंगे वो वाला कॉलम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. Whatever column we want to select, we'll just mention it here. आईडी को लेंगे और नेम को लेंगे अगर, तो यहाँ पे बस मेंशन कर दो. जो भी जो जो कॉलम कॉलम को आपको सिलेक्ट करना होगा वो बस यहाँ पे. We have already seen in our previous video. I have uploaded lots of video in my channel Cognitive Coders. Please go and watch the videos. Okay, it will be very useful for you guys. Whoever is learning, whoever is beginner for this Python. Okay, ओके कमिंग टू द वीडियो. तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको अगर शो करवाएंगे तो करके देखते हैं क्या होता है. तो click ID and name. So why it is not coming? Let me check. Why it is not coming? It should come in column. Let me check wallpaper. Okay. I was thinking like get that thing. Yes. तो अभी ये आ गया. तो अभी using Spark, we can select the two columns. If we want to use here SQL, then what we need to do? Only using PySpark we can select the two columns here. Okay. तो PySpark को यूज करके यहाँ पे दो कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे अगर SQL यूज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोगों को एक टेम्पररी व्यू क्रिएट करना पड़ेगा. ओके. So for using the SQL, we will create here one temporary view. So coming to the temporary view. Let's delete it first. First create one temporary view. So for creating the temporary view, we need to use this syntax. Create or replace temp view. Okay. So in the argument, just pass one name, whatever name you want to keep for your temporary view. So I want to keep it student team, student team. Okay. तो अभी ये TempView क्रिएट हो गया. ये
डिस्प्ले डीएफ के लिए दिखा भी रहा है तुम लोगों को, जो डेटा डेटा को में, और ये टीम भी क्रिएट हो गया यार। ठीक है, तो अब हम इसको सीक्वल से भी रन कर सकते हैं। तो कैसे रन करेंगे सीक्वल से, तो आप ही करके देखते हैं। और चलिए दूंगा, तो कैसे रन करेंगे, तो ये वन पहले तो स्पार्क डॉट सीक्वल से करके देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सीक्वल में रन करेंगे, डायरेक्ट सीक्वल से। ओके, फर्स्ट स्पार्क डॉट सीक्वल पे इट्स वेरी यूजफुल स्पार्क मेथड फॉर यूजिंग द सीक्वल। तो select id and name। ओके, तो जो भी कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बस इसका नाम दे दो, जैसे हम लोग सीक्वल में, अगर सीक्वल तुम लोग जानते हो तो ये तुम लोगों का बाय हाथ का खेल है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये ऐसे आराम से हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। तो अभी तो प्रिंट कर देंगे, तो नाउ यू कैन प्रिंट इट। ओके, यहाँ पे सिंटैक्स एरर दे रहा है, नीचे को ओके, ये देखिए यहाँ पे आप। ठीक है, तो अभी सेम ये टेम्पररी व्यू को हम डायरेक्टली सीक्वल में भी लिख सकते। ये तो हम लोग सीक्वल में लिख के पाथ डॉट सीक्वल से रन कर रहा है, पर डायरेक्टली सीक्वल से भी चला सकते हैं मैजिक कमांड को यूज करके। पहले सेल को सीक्वल में कन्वर्ट कर लो मैजिक कमांड यूज करके, उसके बाद डायरेक्टली प्रिंट करो सिलेक्ट आईडी एंड नेम फ्रॉम क्या नाम था हम लोगों का, नेम स्टूडेंट नेम STUDENT। ओके, स्टूडेंट TempView हो गया। ये आईडी आईडी एंड नेम। तो ये था बेसिक फंडा ऑफ टेम्पररी व्यू का। पर ये टेम्पररी व्यू का ड्रॉअर, बेसिकली टेम्पररी व्यू को हम स्पार्क के सिंगल सेशन में ही यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट आई मीन, in a single session of Spark we can use the temporary view। Okay, if I want to use the same temporary view in a different session of Spark, means in a different notebook, I can't use that। Okay, so Spark architecture will not give me the access for that। Okay, so for that there is a solution that we will discuss in our next upcoming video। Okay, so please stay tuned। I think you have liked this video। Okay, if you think it's a useful video, please do like, share, and subscribe my channel. My channel name is CognitiveCoders। Please do like, share, and subscribe, because you guys support is very much required to us for growing this channel। Okay, thank you for watching this video। Bye।